Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I know I have been MIA for quite a long time, but that was for all good reasons. It was my sister's wedding, and yeah, I was like quite occupied in that. Busy हो ही जाते हैं यार शादी वादी में. It's quite like hectic हो जाता है ना, तो टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था कि मैं बैठूं और वीडियोस बनाऊं. Now that I'm back, I'll definitely make sure that I post consistently. So for today's video, I thought why not share a review video. So yeah, this video is basically on one of the product which I bought in a नायका हॉल ऑफ माइन. लाइक कुछ सदियों पहले, सदियाँ ही लग रही है अब तो मुझे, काफ़ी टाइम हो चुका, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठ के वीडियो शूट करूँ, इसके बारे में बताऊँ. लाइक मैंने इस वीडियो को एक बार पहले भी बनाने की कोशिश की थी अराउंड 1 month पहले, बट इट वॉज अ मेजर फेलियर. लाइक मैंने फुल वीडियो शूट कर लिया था सब कुछ, एंड लाइक व्हेन आई सैट फॉर एडिटिंग आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट द हेक इज दिस. लाइक सीरियसली इट वाज सो बैड एंड आई वाज लाइक डैम यार, इतनी मेहनत पानी में गई. बट देन आई वाज लाइक नेवर माइंड, क्वालिटी is definitely required, so I just cancelled the whole video. It was my first impression of that hip hop strip, but today क्योंकि अब वो first impression तो जा चुका है क्योंकि मैंने एक बार उसे पहले ही use कर लिया है. So this is the second time that I'll be using it, and I thought why not share it with you guys. So now without any further chapar, let's dive into the video. So this is the hip hop strip that I was talking about. It is a cleansing charcoal forehead, nose and chin strips. Now as we know that these strips really help us to remove our blackheads, whiteheads, and also oil and dirt from our face. So before I get into the whole procedure, let's talk a bit about this whole packaging and everything. So basically it comes in a good cardboard packaging, okay, and it has six strips, जिसमें से 2 हैं आपकी फोरहेड की, 2 हैं आपकी नोज की, एंड 2 हैं आपकी चिन की, विच मीन्स 2 + 2 + 2 दैट इज 6. ओके, एंड या इसको मैंने यूज़ कर लिया था पहले ही, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है. एंड ये है जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ. तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें फॉरहेड, नोज एंड चिन की भी है. कुछ लोग होते हैं जिनको फॉरहेड पे भी ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सो उसके लिए ये काफ़ी सही है, बट मुझे नहीं है, सो आई वोंट बी यूजिंग द फॉरहेड वन. आई जस्ट बी गोइंग विद द नोज वन एंड मे बी लाइक चिन वन, जिसके बारे में अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ. ओके, सो या coming to the packaging, this retails for how much? Oh my god, yeah, it retails for rupees 165, and if you're lucky enough you might also grab some discounts. Okay, now let's open it. So there are 4 steps in it. Okay, the first one is wet it, then it's peel it, paste it and pull it. Wet it, peel it, paste it and pull it. Okay, so now let's see how this thing goes on. And I'm really sorry for this whole noise going on. Like there's some construction going on in my building since I don't know, like दिमाग का दही हो चुका है. इट्स बीन सो लॉन्ग यार, मतलब अब तो रुक जाओ, कितने दिन कंस्ट्रक्शन करोगे भाई, वीडियोस बना ही नहीं पा रही हूँ. नेवर माइंड, प्लीज bear with me. Okay, so yeah, they have told that after cleansing your face, wet your forehead if you are using the strip. Okay, nose and chin with warm water बोल रहे, दिमाग का दही हो गया मेरा तो, with warm water, as strip won't stick on dry skin. If your skin is dry, then वो उस पर स्टिक नहीं करेगा. एंड मेक श्योर आपका जो स्किन हो ना वो बिल्कुल लाइक एकदम वॉश्ड हो. ऐसा नहीं कि उसमें आपने कोई मॉइस्चराइजर या फिर कोई सीरम या फिर कोई क्रीम या ब्ला ब्ला कुछ भी अप्लाई करिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कम्प्लीटली अ क्लीन कैनवस सो दैट इट कैन जस्ट रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज out from your face. And the second one is peel it. Peel the strip away from the transparent liner. Now this one, like they are talking about these liners. Okay, I hope you can see it all comes in a liner. तो सबसे पहले हमें अपने नोज को वेट करना है एक टाल से अच्छे से. ओके, एंड देन हमें इसे पील करना है, एंड देन हमें इसे पेस्ट करना है अच्छे से, एंड देन वी नीड टू लेट इट स्टे फॉर हाउ मच हैव दे टोल्ड. They have asked for 10 minutes, but as much as I know it takes around 20 to 25 minutes for me, या फिर half an hour also. Okay, so they have told after 10 minutes once the strip is stiff, वो एकदम टाइट हो जाती है एकदम जो स्ट्रिप है ना. लाइक अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है, बट जब वो एकदम स्टिक हो जाएगी ना बुरी तरीके से एकदम, इट विल गेट सो हार्ड.
So slowly peel the strip off. That's all they have told, and for better experience they have told rub the strip on forehead, nose and chin to remove creases. Recommended to use once every week for long lasting results. Now I won't be recommending you to use it every week until and unless you are someone who has extreme blackheads का problem. अगर वो भी है तो भी I'll say 15 days में एक बार यूज करो, या फिर अगर नहीं तो चलो as you wish, okay? But I will definitely not recommend because I feel that's too much harsh on your face, है ना? Like कभी कभार it's okay, we also need the cleansing thing, but वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा शायद. So चलो अब शुरू करते हैं फटाफट. Okay, so मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है, लाइक थोड़ा वार्म वाटर, एंड उसमें आप कोई भी टाल या फिर कोई भी हैंकी कुछ भी आप उससे डिप करके ना हल्का सा नोज के सारे पोर्स को खोल लो, एंड वो थोड़ा क्लीनिंग भी हो जाएगा. Can you see? One hand is so good and the other one is so horrible. Story of my life. Instagram hand, normal hand. Now these two are very much identical, so I feel this is for your forehead and your chin, and this one is for your nose. Make sure ना काफी पानी हो आपके नोज पे ताकि ये आराम से स्टिक हो पाए. Okay, I'm just gonna pull it off. Okay, I think I've done it correctly. I'm just gonna take some more water, या फिर ये हैंकी कोई लेके इस पे डैप कर लेंगे हल्का सा ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए. By the way, I know I'm looking like a clown, so don't laugh. Understood? So this one is properly set now. Now we'll go for the chin one, okay? And yeah, the same. We'll just follow the same process. We'll just wet this portion first. Now we'll just take it off, peel it off, and then like this, or this, I don't know, I forgot. इसे भी मैं हल्का सा भिगा लूंगी. ये ना मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगा लिया था, इतना आपको नहीं भिगाना है, इट्स अ मिस्टेक. हल्का सा आप इसे भिगा लो. दिस मच इज इनफ. सो आई विल बी बैक आफ्टर से 20 or 25 minutes, जब तक ये पूरा सूख जाता है. Hey guys, just an update. The strip that I had applied that time was like वो बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही पानी लगा दिया था. तो ये गलती आप कभी भी मत दोहराइएगा. अभी मैंने एक दूसरी स्ट्रिप लगाई है. सो या नाउ विल लेट इट ड्राई completely for 10 or 15 minutes and then we'll be back. So guys, it's been good 20 minutes, okay, and now the real thing starts. Now let's just take it off. First I will peel this off, okay. Ooh, it pains. Did it take out anything? Yes, it did. It was little painful but not that much because ये एरिया काफ़ी already flat रहता है, तो यहाँ पे हमें इतना दर्द नहीं होता. The real pain will be here, I feel. So yeah, let's see. Well, मेरे यहाँ पे ज़्यादा blackheads and whiteheads नहीं थे. So yeah, I mean it has done fairly a good job. Now let's get into it. Now it's gonna pain, I'm sure. फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप साइड से हल्का सा पील कर लो, और फिर एक बार में जैसे हम वैक्सिंग करते हैं ना, छट करके निकालना. हमें उसी मोशन में इसे निकालना है. इफ विल ट्राई बीइंग लाइक स्लो तो हमें ज़्यादा दर्द होगा और शायद अच्छे से ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स जो भी है वो अच्छे से निकल भी ना पाए. सो बी कॉशियस अबाउट इट, ओके. व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट टेक आउट साइड से पहले थोड़ा, ओके. नाउ लेट्स डू इट. Ooh. So now let's clean it. Phew, it's done. It was quite painful, okay. Now talking about the blackheads and all, it has removed. Then let me tell you, it has done a spectacular job, okay. Like मुझे ना ये सब स्क्रबिंग ये सब करे हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हो चुका था. सो काफ़ी ब्लैक हेड्स हो गए थे एंड वाइट हेड्स भी. मुझे ज़्यादातर वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है
and I know it's gross, but I'll show you. Okay, you can see the amount of whiteheads and all it has removed. You can see, I think. Okay, like हाँ काफी है. So yeah, it has really made my skin super soft and clean. You can see. So yes, painful, yeah, a little, but it's just a matter of say 2 seconds. But आपकी nose ना काफी clean and soft feel होगी आपको. So yeah, if you are asking about my verdict, then yeah, you should definitely go and try this product अगर आपको बहुत ज़्यादा blackheads and whiteheads की problem है. एंड ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है. जैसे कि आपने देखा विद इन 20 मिनट्स के अंदर ना आप इसे आराम से पील ऑफ कर लो एंड मस्त सब कुछ निकल जाएगा. मतलब लाइक 80% से 90% क्लीन हो जाता है नोज आपका. एंड यस, जो मिस्टेक मैंने की थी ओवर पानी लगाने के ऊपर, वो आप मत कीजिएगा, वरना यू विल एंड अप वेस्टिंग अ स्ट्रिप विच आई हैव ऑलरेडी डन. ओके, सो या, यू डोंट मेक दैट मिस्टेक. पता नहीं मैंने कौन से वीडियोस में देख लिया था कि ऊपर पानी ऐसे लगाना होता है, बट दैट वाज सो रॉन्ग. वो नहीं करना चाहिए आई थिंक ना, एकदम भी नहीं. सो आप भी मत करना. जस्ट उसे आप स्टिक कर दो एंड 20 मिनट तक रखो एंड देन पुल इट ऑफ. So yeah, that was my mini review about this product. I hope you liked it and it was helpful for you, and you can actually decide whether to buy it or not. But what I'll say is that definitely try it once, like give it a try. If you don't like it, then it's fine. I mean, it's quite reasonable, so it won't be a waste also, but try zarur kare. Yes guys, that was all about this video. I hope this video was good, except this नॉइज कमिंग ऑन जो कि अभी बंद हो चुकी है. वाओ, आई फील सो गुड. ओके, सो या, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है. जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड यस, जो बेल बटन है उसको भी हिट करना मत भूलिएगा. ओके, एंड ऑल्सो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड एवरीवन. सो या, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.